unable to manage things in CRM whole day, how can I manage my admin related work with CRM? So there are two concepts, two answers to this question. First of all, you need to understand, you need to watch these things. And the more important part is you also need to understand the role of CRM admin. So many times happens that the CRM admin is not aware about the role, and that creates a major problem. So you please understand what is the role of CRM admin. That will also help. So I will keep on sharing these links with you. Yes, Divya Sharma and Harsh, you are facing lots of problem. So we will have to define what is the lots of problem, because I cannot solve lots of problem. If you exactly tell us what are the problem, then maybe we can solve it. So I will request you to please contact our team regarding this many problems. Then we have Mr. Gaurav Bajaj. He is asking, how do I improve my internal and external management? So I think that's again a very different and generic perspective. It will not be possible to comment something on this from the CRM perspective. Then we have one question from Kalpesh Jain. What is the best approach way to client after giving the quotation? So his actual question is that once we give the quotation, customer is not responding. So why does it happen? So there are two reasons to it. First is the customer thinks that he already has other options. And second is maybe there was no requirement, just we thought that there is a requirement. So here I think there is one video that I will like all of you to see if you are facing with this kind of problem, and which is inquiry qualification. This video will be useful to you. Why I'm trying to suggest videos is I also have articles written properly to answer this question, but it is my experience that people do not read the articles. So it is better that I will share with you. Then after that, we have from CAN systems, Mr. Basantgiri only need to improvise on follow-up procedures and norms. So Basantgiri, once again, I advise you to have few audit sessions, CRM audit session. Now, if you are not clear what is CRM audit, let me share with you what is CRM audit. There was one done sometime back. Let us do it again. Is And CRM audit. uh, I request you, let us do this session, CRM audit with Limesh Parekh, right? So I would like to attend your audit session. I would, and but in that your entire team has to be present. So Okay. if I'm going to do audit session with one person, then it's not advisable. Now this is important for all the CRM users, all the customers of NJ. If you want to elevate your usage of CRM, I request you to book a training review session, this audit Okay. review session, right? And in that, idea is that you should book 3 review sessions together weekly. So if you do one on say 5th of May, then book on 12th and 19th also. So doing 3 review sessions together will set things in proper momentum. So this has been experience and observations, and we have lot of CRM customers and users who have done these 3 or 5 review sessions, and then everything is smoothened. The problem happens is that first of all, people don't want to review, thinking that कि अगर review करेंगे तो दूसरा बार आएगा.
So don't worry about the review. So it is not that the audit is like the income tax audit or something penalty will be levied upon you. Nothing is going to happen. We are just going to figure out what is the best way to use CRM. Not only the CRM, even the processes will get improved. So I have already shared this. And by the way, after this meeting, I will also share this link in our CRM ideas exchange group, right? Fine, Before fine. we Thanks. understand or you book this CRM audit session, I want all of you to understand what is this CRM audit and how it will benefit you. So there is a 6-minute video on this. Do you want me to play the video or आप लोग बाद में देख लेंगे? नो This सर, is दिखा for दीजिए all of you. प्लीज। डिस्प्ले सर डिस्प्ले कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट। Audit service, which is non-obligatory free service for our customers. When I say non-obligatory, it is not covered in our SLA, but we do provide to help our customers to utilize the CRM and be successful in their business in a very effective manner. Before you go through this video, I would recommend you to watch our CRM implementation video first, because you can consider this as a sequel to the first video. So this video will cover everything you need to know about how CRM audit can help you succeed in CRM implementation. So first, let us discuss the benefits of CRM audit. This is the service which our clients love the most. So the first advantage is that CRM audit will increase your user adoption. Your users will know where they are lacking and they can improve on those things. Obviously, CRM audit is about a review system and review mechanism, which helps the team leaders to monitor proper things in an efficient way. So CRM audit helps you to bring out or highlight actionable insights, so which will help you to figure out next steps in any process. It also helps you to optimize the process, avoid duplication of data, duplication of monitoring, and also duplication in the processes. This is the most insightful thing. CRM audit will help you to understand who is performing and who is pretending. And moreover, CRM audit create a stress-free environment, because CRM audit will bring in more transparency in work, which will reduce friction, and that will reduce stress, and reduce stress and reduce friction will give more efficiency and more productivity. So this is probably the first stage of CRM audit. Is your team using CRM properly or not? So obviously the first step is to get your team habituated to use the CRM. This step of audit is primarily focused on figuring out whether everybody is using CRM properly or not, whether their calls, SMS, email, visits every day are getting logged or not. Now, these activities require very minimal effort from the users. So if they are doing this, then probably they will do more complex things. Whether the sales activities of the team are getting logged or not. And then we also analyze number of tickets, number of inquiries, number of deals during the period by users, and number of records created per day, and to check the proper usage of the CRM by the users. And finally, we kind of get a confirmation from the management whether whatever numbers shown in the CRM are right or not. So the purpose of CRM is to show what you are doing. See, जो CRM में दिखता है वो होना चाहिए, जो है वो CRM में दिखना चाहिए. This is phase 2 of CRM audit, where we check the data quality of your CRM data. So in this section, we try to help you to find out missing or incomplete data, incomplete entries, incomplete categorization of product, missing details. So this section of CRM audit will also help you to understand these tools and use them in a much better way. This is the third phase, probably the most important part and the most complex part also. Process quality issues will help you to move towards a process-oriented organization. Perhaps this was the basic reason why you bought CRM. The main reason for process issues is lack of monitoring. So first issue found is missing sales follow-up, delayed complete responses, which means you are missing your SLA, your customers getting annoyed and upset. Finally, getting wrong assignments, means assigning the records to users who are non-existent. This is just an example. There are many such scenarios which will be identified in process audit. So how is this audit conducted? So let's understand who, how, when, what of CRM audit process. So how do we make this CRM audit very effective? The
First is these are all online sessions, which means anyone can attend this session from your team from anywhere. No one needs to travel. To make this thing effective, all the stakeholders in the CRM, for example, boss, team leaders, admins must join. Juniors may join, but it's optional. This is the crucial thing where people make mistake. So our team is doing CRM audit and the client will assign some junior person to attend that audit. There is no purpose in doing CRM audit if you are not going to change things. So we use your regular CRM dashboard, pre-built reports, and CRM UI. So we are not using any outside tool, which means that in future you can do audit on your own also by using the same tools. If you are concerned about data privacy, don't worry. We have got you very well covered. There is an NDA. By the way, for audit, we only need to access your CRM dashboard and CRM summary data. We don't need to go into detail. And these are the common observations that we have found while CRM. I will request Team NJ to please mute others. Audit. So this will help you to prevent this kind of mistakes on your own. First and the most common mistakes is that no one is monitoring anything. I'll speak this in Hindi for proper understanding. हम उस देश में से आते हैं जहाँ पे लोग टिकट भी इसलिए निकालते हैं कि टीसी आ जाए, इसलिए नहीं कि वो ट्रैवल कर रहे हैं. People don't do things if they know that no one is going to monitor it, no one is going to observe it. This is another common problem. Seniors in the team are not using CRM and we are expecting juniors to use the CRM. This is not going to work. Actually, seniors should be setting the trend in using CRM. Now, CRM tries to bring in the transparency. If the culture of your organization promotes transparency, then this will be helpful. If there is no transparency in the organizational structure itself, then CRM will be an obstacle to it. CRM obviously requires discipline. If there is no discipline and if there is no one to implement the discipline, then implementing CRM becomes difficult. So these four are very commonly found problems in CRM audit. However, doing CRM audit on a regular basis, which is generally once in a 15 days, helps you to overcome these problems slowly. Implementing CRM is about changing the habits. Get your CRM audited today and start changing habit of your organization. Thank you very much. Thanks for. So I hope now all of you have understood the importance of audit and doing this audit in a regular basis. Generally, we recommend doing audit every 60 days. But if you're not done till now or not done till a long time, what I would suggest is book 3 weeks in a sequence. That will help. And I have one surprising fact for every one of you. Do you know what is the number one reason or the main reason why your team is not using CRM? And I have a video for that also. Now, those of you who are not able to see the videos when we send something to you, all of you are participant in one group called CRM Ideas Exchange. Means all the bosses are in that group, and each of your organization also has one WhatsApp group. And we generally put a lot of important information in that WhatsApp group. But we see that no one is watching those videos. No one is reading the article. No one is trying to understand how to use this. Friends, I request all of you, see our journey in the CRM in initial 3-4 years was very bumpy ride because we did not have anyone to guide us. Okay, I'm talking of 2004 to 2006. But then we understood what is the difference. This is not software, it is something else. So let me try to explain why your team is not using CRM. By the way, I had sent this video to almost all of you. If you have seen this video, just write yes in the chat. And if you have not received the video from me on WhatsApp, you write not received. And if you have received and not seen, write not seen. I will, there is no harm in seen or not seen, but I will appreciate your response. Actual reason why your users are not using CRM, because they know that you are not serious. Yes, I'm serious about it. Let us try to understand this. When you bought the CRM, you made all the customizations, you configured it according to your business processes, and then you told all your users to use the CRM, but they are not using it. Then you arranged multiple trainings for them, but still they don't use the CRM.
You also tried to do a lot of automations and data restrictions in CRM. But unfortunately, that also doesn't work. Most of the time in these scenarios, you think that something is wrong with the CRM, so you make more customizations. But still the same result, they are still not using the CRM. I've seen many people who incentivize the users for data entry, but it doesn't work. They even penalize the users for not using properly CRM, but mostly that also doesn't work. So where is the actual problem? As I told you, the actual problem is that your users know that you are not serious about it. Now, how do you explain them or how do you show them that you are serious? Now, there are two ways to do that. Either you can talk to me or you can grab a copy of my book called Cracking the CRM Code and understand the whole process. This book, Cracking the CRM Code, talks about 30. So don't worry, I'm not trying to market my book. And in case if you are interested to read this book and if you want an hard copy signed, you can send your address to me. We will send one book to you. And if you want to get an ebook, you can just go to Amazon and search for Cracking the CRM Code. This one. And very good views from national and international readers. I strongly suggest you should read this book. If you want ebook, buy from here. If you want to read a hard copy, you send me your address. We will send you that. Okay. And now coming back to our request. So somebody from Sunil from Can Automation, CRM overview. Sir, I think watching this Sangam concept talks will be the best way to do these overviews. Then Ashraf Khan for sales purpose, not clear what he meant. Then Pushpa from Capricorn, how to generate lead deals in lockdown time because customers are not ready to invest in the time. Now, many people have asked this question, right? And I will stop sharing because I want all of us to concentrate on something else. Many people have asked this question, how do we generate inquiries in this lockdown period? I think in emotional intelligence of many qualities, one quality is empathy. And we need to try to support our customers, try to help our customers during this in whatever way we can. You just take example of what we are trying to do. So most of you are already our customers. So we are already providing you the support. We are already providing you the software. So why we are doing all these things like concept talks and inviting 200 people, calling everyone, Baba, attend this webinar, and then preparing, doing all the preparations for this. And then the CEO of NJ spending 1.5 hours with all of you. Why we are doing this? Because this is not in my SLA. This is not what I'm supposed to provide you. This is extra something that we are going to do. And why we are doing this? We are trying to help our customers to face this situation as better way as possible. Same thing I think you can also do. So you just try to contact customers. Don't ask for orders. Many people have also requested, how do we generate more inquiries? I suggest don't ask for inquiries. Just ask whether people are okay or not. Right? Just maintain the relation. You will get business. Don't worry. Businesses have not stopped. ऑफिस जाना बंद हुआ है, ट्रैवल करना बंद हुआ है, सबका मिलना बंद हुआ है, धंधा चल रहा है सबका. मेजॉरिटी लोगों का धंधा चल रहा है, मेजॉरिटी कंपनीज चल रही है, मेजॉरिटी कंपनीज का बिजनेस चल रहा है, सब कुछ बहुत कुछ व्यवस्थित चल रहा है. ठीक है. ओनली फ्यू बिजनेस कैटेगरीज विच मतलब जो हमारे कस्टमर्स है उसमें से मैं बता सकता हूँ कि जिनको बहुत बुरी तरह से हिट हुआ है. ठीक है. अदर देन दैट किसी ने नंबर ऑफ यूजर्स कम नहीं किया है, सबका काम चल रहा है, सीआरएम में एंट्री सबका बराबर हो रहा है, मतलब कि ऑन एन एवरेज इकोनॉमी चल रही है. दैट इज व्हाट
I can say from my 7,500 users which are using my CRM. So if you want to ask me how to generate more business, just keep relationship with your customers at this time. Ask them whether everything is okay with them or not. Just ask their well-being and their family's well-being and their team's well-being. And if there is something that you can do to help your customers, right, that will be the best idea. So let's say I understand that Capricorn team is into the designing software. So if it is possible for you to arrange webinars which will be useful for your customers, users, so I strongly suggest arrange as many webinars as possible, call as many people as possible, and do that. See, in today's meeting, now this meeting which all of us are participant, we have around 10 to 15 people who are not NGS customer. They have come to this meeting because they just want to understand what is CRM. So either they will go for CRM or they will inform others about this company or this CRM. So that's the way we get more business, right? And one more thing which I always feel very strongly is about cross selling. And we'll not talk about cross selling in this session. Probably we should have one cross selling session, one entire concept talk dedicated to cross selling, but some other time that. So I hope I answered this question. If Pushpa is in this meeting today or anyone from Capricorn, you can please acknowledge that you have received this answer. So same, how to generate new business. Then yes, my friend Sharad has asked efficiency and productivity in work from home scenarios. The best way to maintain this. So here also I will again stop the presentation and I want to share one more thing. And I would appreciate if you can share in the chat yes or no if you like or dislike my idea. So how do you maintain the efficiency in this kind of work from home scenario? So let us first all understand one thing, right? And this line I would like to speak in Hindi. ऐसा नहीं है कि भगवान ने ना हमें बनाने के बाद अच्छे लोग बनाना बंद कर दिया. अभी भी वो अच्छे ही बना रहा है, बेस्ट से बेस्ट मॉडल बना रहा है, हर साल अपग्रेड करके बना रहा है. ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं ना वो सब अच्छे ही हैं. सो डोंट एज्यूम कि ये टीम पूरा का पूरा कामचोर है, ऐसा नहीं है. हाँ ठीक है, ये हो सकता है कि उनको कोई चीज नहीं मालूम है, कोई चीज सीखना है, कोई चीज क्लियर नहीं है, उतना विजन नहीं है आपके जैसा, लेकिन कामचोर नहीं है. और अगर लगता है कि कामचोर है तो ये सोचो कौन लाया भाई उसको, हु हायर्ड देम? आप ही लाए ना, तो क्यों फरियाद कर रहे हो? ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू अंडरस्टैंड दैट आवर टीम्स आर गुड, अभी बात आता है कि कैसे एफिशिएंसी बढ़ाएंगे. तो सबसे पहला चीज जो करने लायक है, व्हाट वी डू, एंड दिस इज नॉट व्हाट आई एम जस्ट प्रीचिंग, वी आर प्रैक्टिसिंग आल्सो. तो जनरली हम लोग एक वीक में 2-2 बार मीटिंग करते हैं पूरे, मतलब टीम वाइज. वी आर 80 पीपल. सो 15 दिन में एक बार सारे के सारे 80 लोग जमा होते हैं हम लोग जूम पे, जस्ट टू से हाई टू ईच अदर. और वीक में 2 बार पर्टिकुलर टीम्स के साथ मीटिंग होती है. तो काम की बात भी होती है और ये भी बात होता है कि भाई घर में सब ठीक है ना, इज एवरीवन ओके एट योर होम. सो दिस इंक्रीजेस दैट कि भाई अच्छा हम सामने सामने मिल रहे हैं ना, ये अनुभव हो रहा है. That increases the overall efficiency of organization. In fact, when you work from home, there are things on which you save time. So many of my team members have to travel like 30-45 minutes, or some have to travel 1 hour also. So now because they are working from home, they are saving this 30 minutes or 45 minutes or 1 hour. So that's the saving, right? Another lot of savings are there. Now they are not consuming my air conditioning, my electricity. अच्छा, हर शुक्रवार को एनजे में नाश्ता होता है, आजकल नाश्ता नहीं मंगा रहे हैं. तो लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग सेव्ड, राइट? तो सामने उनका भी सेविंग हो रहा है, दोनों साइड का सेविंग हो रहा है. ठीक है. वी जस्ट नीड टू कीप इन टच विद आवर टीम. दैट हैज वर्कड फॉर एनजे एंड आई एम श्योर इट विल वर्क फॉर यू आल्सो. सो if you agree or disagree with this idea, I would appreciate if you can write in the chat.
अच्छा, आगे बढ़ते हैं. CBT solutions में Kasturi More has asked, easy to sell product. Now I'm not sure what exactly C meant to ask. Means I know what CBT solution is doing, and that is easy. You just need to work out more ways and discuss this. And yes, Santosh Bhai would be a right person to answer that. Do we have anyone from CBT solutions here today in the meeting? Okay, then we have Brajesh Kumar, how I followed with client in lockdown. Sir, as I told, don't follow up for business. And even if you are following up for business, first ask, "Bhai, sab theek thaak hai na?" And just understand what kind of mental stress people are going. So I realized this very badly and very bluntly when I was calling one of my partner in Jhansi, um, for one webinar which he had booked, right? So he had booked the time. He did not attend the webinar, so I called him कि भाई क्या हुआ, आप लोग webinar में आए नहीं, meeting में आए नहीं करके. And then he said, सर मेरे मम्मी और डैडी दोनों को कोरोना पॉजिटिव आया था, तो मैं पिछले 2 दिन से आई एम इन हॉस्पिटल विद देम. So you just imagine, we can't just go and keep asking business for people. People are actually in a bad shape. Lot of people are in bad shape. So once again, I would want all of you to understand and appreciate that concept of empathy that is required. Now we have one question from Darshan Gandre. Pushing team to use. My favorite question. I think I have already answered this by showing you the video, why your team is not using CRM. Then Ensonic, we have Pranaya Sharma, sales management. Now here I would like to give two answers, right? First answer is, you have this Sangam CRM concept talk videos. Watch this. There is lot of material which is directly useful to you. And if you are seriously interested in understanding the sales management, so then I would suggest you go through this book, Cracking the Sales Management Code. This is absolutely mind-blowing, right? So if there is one book which I want to recommend to anyone for understanding sales management, this is the book. So if you want to understand sales management, this is the book. And I have a copy of this. If you want, I can lend it to you. So just ping me on WhatsApp. I will send that copy to you. Okay, by the way, what I will do is I will share in CRM ideas. So most of you are in this group called CRM Ideas Exchange. I mean the bosses. And those who are not in this group, you can ask your boss to check out this message regarding the CRM audit. And yes, if you want to read this Cracking the CRM Code book, just share with me your mobile number or ping me on WhatsApp. I will share that book to you. Now going ahead to question. Kailash Gupta ji, we have already communicated on WhatsApp regarding this, how to automate the entire sales process. So the concern of Kailash ji is to send some automated messages once the inquiry is arrived. So no need to worry here. You just need to create a template and give it to us. In CRM, it can be configured that whenever you enter a new inquiry, this messages will go. Very simple process. The difficult part here is not the automation in CRM. That's very easy. It will take not more than 5 minutes or 10 minutes for our team to do it. The difficult part is to create the messages, right? Because creating message will require us to think, right? And I have one analogy of marketing, pretty strange and awkward, but I will share that with you. So when we talk about this messaging and CRM and using CRM for marketing particularly,
So in that, we forget that marketing relates more to the psychology and not the technology. So we focus more on the technology, but marketing is psychology. So when we are talking of marketing, we are trying to convince someone, we are trying to woo somebody. हम किसी को ना रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं. And when you are trying to woo somebody, though I resonate marketing with more of romance. ठीक है, वो धीरे धीरे होता है, सोच के करना पड़ेगा. यू कैनॉट से कि अच्छा संदीप भाई ने ऐसा किया तो मैंने ऐसा करना चाहिए. दैट डजंट वर्क. सो व्हाट काइंड ऑफ मैसेजिंग यू वांट टू मेक, you just think on one point, what kind of message your customer wants to receive. ठीक है, रोमांस में भी ऐसा ही होता है ना, हम ये सोचते हैं कि सामने वाला क्या सुनना चाहता है वो बताते हैं. मार्केटिंग में भी यही होगा, सामने वाला क्या सुनना चाहता है वो बताइए आप. So marketing works. There is, I don't think big science is there in marketing. And let me tell you, even a 3-year-old kid understands this very perfectly. Okay, then we have a question from Ankit Ameria. Not getting good rates from buyers. So he means that buyers are always in negotiation. So sir, there are two things. A lot of you have asked questions about the sales and sales management and not CRM. So I appreciate your trust in me that I can answer all these questions, but this answer to this question will vary from business to business. So we will have to discuss in that perspective. And I will request Mr. Thiru Navukarasu, sorry, I am not able to pronounce your name, to not share your address here, sir. You send it to me on WhatsApp. My number is 955. Okay, on this you can send, or I'll show you one more thing. You can send 900 to me on my WhatsApp number, right? And you start getting response. So I have an automation configured on my WhatsApp. If you send 900 number to me, 900, just type 900 and send WhatsApp to me. You will get that. So how to do this will vary from business to business. And here also, I think we can help you by CRM audit. It will help you to identify a lot of things. Then we have more questions on how to increase sales in lockdown. Sir, the only idea that I think is workable is to just keep on touching with the customer. So I'll tell you some of the odd things that we have been doing and we have been facing. So NJ has been always operating from a village called Bhilad. I'm not sure how many of you know where Bhilad is there on the. Let me shut down this tidik from my WhatsApp. I think it will keep on disturbing you. Okay, I think now you will not get that tidik message from WhatsApp. Sorry for that. So when we are operating from a village and most of my customers are in cities and other parts of India, how do we get business, right? The most efficient thing that we do is keep and manage the relations with our customers and our partners. Okay? So then you don't have to worry about generating inquiries. And by the way, for all these things, I think CRM audit will help you, because when you have 3 or 5 meetings with our team and we do the review, everything changes. You can take my word for it. Then I hope you do, all of you are not minding me taking all these questions, because these questions have been given to me by you. And I think even if we spend this entire session on these questions, it will be more helpful to you. Just quick yes or no from all of you in the chat, whether you want me to continue receiving this, answering these questions, or should I move to. Okay, yes means I keep on answering the questions. Thank you. Okay, so I will keep on answering the questions. Then
Okay, Hikoki Power Tool. I appreciate your team. Lot of people have enthusiastically participated in this and also given your comments and remarks and queries about this. See, I think the first step to improvement starts with acknowledging that there is something here which can be improved, right? So I appreciate the queries, right? And I appreciate that it takes a lot of courage to write that I don't know this, you please explain. So thumbs up to all of you. So how to manage our end user? Sir, here once again, I would request you to go through this concept talks. Okay, here I want to tell you two things. When do we do concept talks and from where do we come up with these topics? So we come up with the topics when we have our meetings with our implementation team. So our implementation team, which has 10 people, 9 ladies and 1 boy. So when they talk to you continuously, they hear your complaints, they observe your usage, they understand the challenges that you and your team are facing. And then based on that and request received from all of you, we make this concept talks and we design this webinar for you. Secondly, what inspires us to create those videos? Why do we create those videos? Why your CR users are not using CRM? And there are lots of useful videos on our website, right? So the process is something which we have to explain again and again and again to lot of people. Then we create a video for it. And if you want to understand how hard it is to create a video, I give one friendly challenge to you, right? Just create a 3-minute video on feedback of this session and send it to me. Feedback is not important. You sending it to me is not important. I want you to feel the pain and effort that goes in making one video, right? So when we make all these videos, these are just for you. These are not for marketing purpose, right? These videos are meant for my existing customers. These are not for marketing. So when you make a video, lot of effort goes. Please have a look at it. आप उसको लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, नो वरीज. Just watch and take maximum benefit or advantage which you can take. So sales order tracking and how to manage your users, both these things are covered. Once again, I will request the Hikoki team. Let's have few audit sessions, sir. आप आपके टीम लीडर से बात करिए, जो भी है. अगर आज के मीटिंग में है तो let's talk immediately after this today's session. एंड मैंने आपको लिंक शेयर किया है, उसमें जाके आप फाइनल करना किया. Then we have some more queries from Hikoki team, how to collect dealers overdue and everything. See, most of these things are not directly related to CRM, but we have a very unique advantage in NJ. We know 450 businesses, right? क्योंकि आप लोग 450 है. So when we talk with 450 customers, we know 450 different kind of businesses, what kind of challenges they face and how they resolve it. That is the reason we can share with you all of these things. ठीक है? तो ये जो payment collection, this is a very different issue, and we think that problem in payment collection happens when the payment is to be collected. I think it's not that way. The problem in payment collection has happened much before we actually collect the payment. I hope I clarified it. ये हम जब पैसा मांगने जाते हैं ना, तभी जो मांगने में दिक्कत आ रहा है ना, वो दिक्कत तब नहीं आ रहा है, दिक्कत बहुत पहले आ चुका है, ये दिखता तब है. ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ना बहुत पहले से होगा. ये जो बहुत पहले से होगा ना, वो करके रखना पड़ेगा. I will give you my perspective on negotiations. ठीक है, and I'm planning to make a video on it. So this is like a teaser for all of you. Whether if you like this perspective, then it will be inspiring for me to create the video. Most of ऐसे लोग ऐसा समझते हैं कि if you want to do a better negotiation, you should have negotiation skills. Then you should put this dialogue. You should say this lines.
you should do this trick and you should do that trick, and there are whole lot of gimmicks which are profited to us. हमको बोला जाता है कि ये करो ये करो ये करो, ठीक है, but we can't do that, right? Why? क्योंकि डर लगता है. किस चीज का डर लगता है? कि कस्टमर चला जाएगा. ऐसा क्यों लगता है डर? ठीक है. Imagine a scenario where you are 100% sure that you have a steady flow of inquiries coming up and you have a perfect mechanism for qualification of those inquiries. और अब कोई कस्टमर अपने को बोल रहा है कि भाई कम कर, ठीक है, हम उसको बोल सकते हैं ना, नहीं कम हो सकता है, इतना ही रहेगा, ठीक है. व्हाई? बिकॉज वी आर कॉन्फिडेंट, यहां से हिम्मत है कि भाई और पूरा लाइन है अपने पास कस्टमर का. सो आई हैव फनल विथ मी, फनल है मेरे पास. ये एक कस्टमर नहीं मानेगा ना तो प्रॉब्लम नहीं है, बट अवर प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द टाइम इज दैट ईदर देयर इज नो फनल और वी आर नॉट एबल टू सी द फनल क्लियरली. तो क्या होता है ना, वो हिम्मत नहीं चलता अपना इधर बोलने का कि सर ये पेमेंट तो एडवांस ही चलेगा, उसके बगैर नहीं चलेगा, भाव तो इतना ही रहेगा सर, उसके बगैर नहीं चलेगा, मेरे सर्वाइवल का प्रॉब्लम है सर, इतना ही चाहिए. एंड we switched to this mode maybe 14-15 years back, और that was a turning point, क्योंकि अगर वो हम नहीं करते ना तो शायद we would have been history, मतलब उस तरह से in a bad way history हो जाते, तो अपना ये मीटिंग ही नहीं होता, ऐसा हो जाता था. So here I want to relate one dialogue of a Bollywood movie to you. आप में से बहुत से लोगों ने घायल देखा होगा, ओरिजिनल घायल सनी देओल का, ठीक है. तो उसमें एक जगह पे ऐसा है कि सनी देओल और अमरीश पुरी एक बार रात को मिलते हैं और वहां पे अमरीश पुरी का एक गुंडा उसको चाकू बताता है, और वो जो चाकू बताता ना उसके बाद सनी देओल डायलॉग मारता है कि चड्डा इसको बोल, ये हथियार मर्द ये हथियार चलाने की हिम्मत जो है ये मर्द लेके पैदा होता है. हाउ इट इज रेलेवेंट हियर? ये जो नेगोशिएशन करने का अपने को हिम्मत है ना, ये कहां से आएगा? नेगोशिएशन करने का हिम्मत चाहिए तो वी नीड टू हैव गुड फ्लो ऑफ इंक्वायरीज एंड गुड एंड ट्रस्टेड सेल्स प्रोसेस. थोड़ा लेक्चर ज्यादा हो गया तो माफ करना, बट आई थिंक दैट इज वेरी रिलेवेंट. सो दैट्स माय टेक ऑन नेगोशिएशन स्किल्स, sales process, conversion, how to close a deal. So all these will be sir part of sales training. Maybe we can also have good sales consultant speak to all of us, right? आप सबको बुला सकते हैं. So we have tied up with Mr. Nandak Pandya, who is our corporate mentor. ठीक है, if all of you want we can have one session with him. आप सोच के इतना तो विश्वास रख सकते हैं मेरे पे कि जिसको मैं मेंटर बोलने को तैयार हूं ना तो उसमें कुछ तो होगा. Then increase sales across engaging content. अच्छा, ये टिकट एक्टिविटी है ना, टिकट एक्टिविटी के ऊपर शायद वी शुड डू वन concept talk, and I will request NGS team to note it and announce it. Maybe next 1 or 2 concept talks में ये करते हैं कि support management के लिए CRM कैसे यूज होता है. See, most of the concept talks that we have done till now is focused towards sales. It is not focused towards the service part. Then Mr. Arvind, if you are here, I will strongly recommend that you watch this concept talks. सेल्स टीम को कैसे मैनेज करना है इसके ऊपर 90 मिनट का अपना डिस्कशन हुआ है. 90 minutes. That would be very useful to you. Then we have Rinku Shah from Ishanya. Sometimes lengthy quotations sent in Excel by users. Rinku madam, we just saw one video. It explained why your users are not using CRM. This is exactly related to that. आप अलाउ करते हो तो होता है, नहीं अलाउ करेंगे तो नहीं होगा. ऐसा क्यों होता है कि हम लोग व्हेन वी गो टू मैकडोनल्ड्स हम लोग वो एक्स्ट्रा चटनी नहीं मंगाते? ये इडली वाले के पास तो लेते हैं, वहां क्यों नहीं लेते? वहां उन्होंने हमको आदत नहीं कराया वैसा. All customers are telling to call after 2 months. ये same, we have already answered this. I suggest do not call for orders. Just call and ask whether customers are okay or not. Ask for their well-being.
आप ऑर्डर का चिंता मत करो, ऑर्डर आएगा, पक्का आएगा, आपने रिलेशन रखा है तो पक्का आएगा. We have a sales channel, distribution channel, and a corporate sales channel. How does CRM support the style of sales in all these three channels? हाँ, ये जो क्वेश्चन पूछा है ना समीर भाई ने, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. एंड इफ एट ऑल हम ये क्वेश्चंस देने में रह गए, तो ये जो सेल्स प्रोसेस का आज का डिस्कशन है ना, वी विल ट्रांसफर दैट टू नेक्स्ट संगम कंसेप्ट ऑफ. बट दिस इज द एग्जैक्ट टॉपिक ऑफ टुडे सर. आपने टॉपिक को ही क्वेश्चन में लिखा है. Technical support and queries, Mr. Jayesh Sampat. Okay, he is not yet using CRM. He wants to buy CRM or probably understand the product. Then there is no interstate travel. Sir, ये सब ठीक है. We need to keep in touch with people on phone and probably explore there. Then Sachin Lagad, head of sales. Sachin भाई, to request to you, एक तो ये कि आप पूरा जो सीनियर टीम है ना, वो बैठ के ये हाउ टू यूज ओपीआर फॉर सेल्स टीम रिव्यू है ना, ये देखिए. और विशाल सर को साथ में लेना है तो उस मीटिंग में साथ में लीजिए. ठीक है, ये फर्स्ट रिक्वेस्ट है. और दूसरा रिक्वेस्ट है, ये जो मैंने अभी बोला ना कि ऑडिट करना है, ठीक है, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का सेल्स का ऑडिट करते हैं. और जैसे मैंने बोला 3 या 5 हफ्ते तक कंटिन्यूस करते हैं. आई एम ऑल रेडी फॉर इट. मेरे साइड से पूरा का पूरा कॉपरेशन है. सो यू जस्ट रजिस्टर देयर. एनीवन फ्रॉम खिल टीम, कामत होटल की टीम से है लोग इधर? क्या सचिन भाई है इधर? क्या बात है, आप लोगों को ये भी मालूम है कि मैंने पिक्चर का नाम गलत बोला. सॉरी फॉर दैट. यस शीतल मैडम, यू आर राइट, इट्स दामिनी. विवेक और ऑल्सो गॉट. ओके, तो सचिन भाई नहीं है तो आप उनको कन्वे कर देना, और विशाल सर को भी बोलना. Then limited staff. How to manage the closed one deal if you are getting order of 2 items out of 5? How to bifurcate that in CRM? सर ये एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चन है. दैट शुड आइडियली बी मैनेज्ड इन, हाँ, इसको दो तरह से देख सकते हैं. सो द आइडिया इज दैट आई हैड कोटेड द कस्टमर फॉर 5 आइटम्स, आउट ऑफ विच आई हैव पार्शियली वन द डील. Out of 5 I have received 2, but 3 are still pending. So what we do typically in It's this 5 scenario, o'clock. what we do in this scenario is we will create one more deal for that 3 items and close this deal as one. I will repeat what I told. Let's say I have a deal going on with Kesaria Rubber for 5 users of CRM, right? And Kesaria gave me order for 2 users. So I will close this deal as one for 2 users, and I will create at the same time, same day, same time, same hour, same minute, I will create another deal for 3 users, right? And then give a next expected close date on follow-up date for it. So anyone from here, Kesaria Rubber, I hope the question is resolved. Kesaria में से कोई है क्या? Then we have Bhavyashri from LDS Infotech Bangalore. Follow-up procedure and how to convince end customers for the deal closer. So here I think first of all, this CRM process and everything, the sub talk will help you. But more than that, see, when you have regular review meetings, I will share with you what we do in review meeting. So in review meetings, everyone already knows the numbers, right? So we have review meeting of our sales team for 2 hours every Monday. Sometimes it goes beyond 2 hours also, and we are okay with that. हम Monday first half पूरा का पूरा sales review meeting के लिए रखते हैं. And guess what? We don't discuss targets in that, right? फोरकास्ट का बात होता है, लेकिन वो शायद 15-20 मिनट के लिए होता है. Forecast is based on CRM, right? Then we spend lot of time
on listening to our sales team on their experiences. कि अच्छा सर कस्टमर ऐसा बोलता है तो क्या करने का, कोई ऐसा बोलता है तो क्या करने का, कोई ऐसा करता तो क्या बोलने का, कोई ऐसा मांगता है तो क्या करने का, right? And when this kind of experiences are discussed in sales review meetings, the entire sales process evolves and the knowledge of sales team is also increasing. I think this can help. इसका आप थोड़ा सा ट्राई करके देखिए. अगर एलडीएस की टीम से कोई और सीनियर मेंबर है तो प्रोबेबली यू कैन एक्सप्लोर दैट. एंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपके सेल्स रिव्यू टीम में डिस्कस होने चाहिए कि फॉलोअप का क्या प्रोसेस होना चाहिए. आई विल गिव यू एग्जांपल. इन एनजे वी हैव क्लियर कट डेफिनेशन कि इंक्वायरी आया तो 3 बार फॉलोअप करना है. 3 बार में अगर फोन नहीं उठाया तो वी विल मार्क इट एज डेड. दिस इज डिफाइंड इन द सेल्स प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन. ठीक है. सेल्स प्रोसेस डॉक्यूमेंट मतलब एक ही पेज का है, बुलेटेड लिस्ट है, 8 या 9 पॉइंट लिखे हैं उसमें और कुछ नहीं है, एकदम सिंपल देसी स्टाइल में. हाउ टू कीप कस्टमर एंगेज्ड, व्हाट विल बी द सेल्स साइकिल, ये भी है ना ऋतुजा जी, आपके टीम के साथ ही डिस्कस करना पड़ेगा कि आपका प्रोसेस क्या है. एंड सम ऑफ योर सीनियर टीम मेंबर्स विल बी एबल टू आंसर दिस. Now there are lots of bosses and lots of executives in today's meeting. I want to share one thing which will be useful to all of you. See, जब भी सेल्स मैनेजर होता है और सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है, right? Sales executive has lot of information and sales manager has lot of experience. The best way of managing the sales team is that keep exchanging this information and experience on a continuous basis with as much velocity as possible. ये अगर अच्छी तरह से हुआ ना तो आपका धंधा बढ़ जाएगा, 100% बढ़ जाएगा. आपके सेल्स मैनेजर के पास या बॉस के पास there is lot of experience, right? Experience about what to do in what scenario. ठीक है. But who is facing this scenario? Scenario is faced by your executive. Executive has the information about the customers because he or she is talking to them on a daily basis. तो ये इंफॉर्मेशन अगर सेल्स मैनेजर को मिलता है तो सेल्स मैनेजर उसका अनुभव शेयर कर सकता है कि भाई ऐसा हो रहा है ना तो ऐसा करने का. तो दिस विल हेल्प. Mr. Anand Jain for not using this important feature. Sir, not to worry. See, I did not do meditation till almost 47 years of my life. तो कोई दुख थोड़ी करूंगा अभी कि यार 47 साल चले गए मेडिटेशन नहीं किया. वो तो जब से चालू किया तब से चालू किया. डोंट वरी, अभी यूज करने लगे, अभी यूज करिए. Priority of closing a deal keeps on changing because of this lockdown. This is absolutely normal. Yes, Anu. This is absolutely normal. And once again, if you want to optimize the process, I would request MBM team to book the audit. Right? You get your CRM audited. And when I say auditing the CRM means it's not like हम interrogation करेंगे. ठीक है. जो छोटा छोटा चीज होगा वो सुधारेंगे और 3 या 5 हफ्ते में I can guarantee to you the things will change. And this we have done for a lot of companies. 5 meetings is the maximum it takes, right, to change everything. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको. ये 5 मीटिंग में ना टीम का आदत बदल जाता है. ये दावा है एकदम पक्का. तकलीफ वहां नहीं है टीम का आदत बदलने में, तकलीफ बॉस का आदत बदलने में है, क्योंकि बॉस का आदत 5 मीटिंग में नहीं बदल सकता है. Now with due respect to all the bosses in the meeting, don't mind, don't feel offended. लेकिन ये बात हकीकत है. It is very easy to change habits of team. 5 मीटिंग में टीम का हैबिट बदल जाता है, पक्का बदलता है. ठीक है, ये मैं अनुभव से बोल रहा हूँ. लेकिन बॉसेस का आदत नहीं बदलता है. राजीव गीते, राजीव, if you are here in this Salesforce management के ऊपर we have fantastic concept talks. Rajiv is not yet the customer of CRM. He is probably just evaluating the solutions. Then Mitul Bhai and 2 people from Kronali and Mitul Bhai cross-selling.
So sir, cross selling के लिए we already have lots of things, and if you have already migrated to Sangam, so we are planning to create one module in Sangam CRM for this cross selling. So it's not a module, it's just a small panel where you have to select. But let me tell you, it's not an automated process. अपने आप कुछ क्रॉस सेलिंग नहीं होते रहना है वाला है, ठीक है? वो आपका टीम करेगा, ये सिर्फ टूल है. Kiran Soni says customer say wait time for COVID order placement due to COVID. हाँ ठीक है, मतलब कुछ टाइम राह देखने को बोल रहा ना, कोई बात नहीं, आप कांटेक्ट करते जाओ. कुछ लोग अभी डिसाइड नहीं कर रहे हैं. सी देयर आर टू काइंड्स ऑफ कस्टमर्स दैट वी आर फेसिंग इन CRM business, right? So that is a generic, ये हर business में ऐसा होता होगा. There are some people who think that any which ways we are not doing anything right now. The workload is very less. So let us implement the systems, right? And they are putting a huge emphasis on implementing the CRM. So they are buying CRM right now, right? This is the one kind of customer. There is another kind of customer who is telling, boss, there is absolute uncertainty into the market. We are not sure what will happen. So we don't want to take any risk. We don't want to implement anything now. जैसा है वैसा रहने दो, ठीक है? So I think both the kinds of customers you will also find. Anshul Agarwal has a question: how to maintain sales in pandemic situation? Sir, best way is to optimize the usage of CRM. And when I say usage of CRM, I'm not speaking in the technical terms. I am speaking in the terms of the managerial process. How our team is leveraging the CRM, that is important. तो CRM में जो information है ना, CRM में जो process का automation possible है, how is your team leveraging that? If your team is not leveraging that, I think we need to reconsider this. ठीक है? तो अंशुल जी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप चाहिए तो समीर भाई से भी बात करना. आपको भी ये ऑडिट वाला सेशन है ना, अगर 3 या 5 ऑडिट सेशन किए, बहुत फर्क पड़ेगा. और ये ऑडिट सेशन से क्या फर्क पड़ता है आपको, अगर फीडबैक लेना ना, एक बार मनीष गुप्ता से फीडबैक लेना. आई डोंट नो वेदर मनीष भाई इज इन दिस मीटिंग और नॉट. मनीष गुप्ता फ्रॉम सरस्वती, वो दिल्ली के लिए, इसके लिए दिल्ली के हैं, इसके लिए आपको रेफरेंस दे रहा हूं. अंशुल अग्रवाल, आर यू देयर इन द मीटिंग और नॉट देयर? So I think we have covered most of the types of questions that have come. अभी सब है ना repeated है. Just want to know how to make effective calls. Yes, Anshul ji, I hope you got the message. ये negotiation skill development के ऊपर भी अपना discussion हो गया. Measuring and monitoring. Mr. Santosh Kumar. Santosh ji, if you are there in the meeting, we already had one detailed concept talk on this. Now I have one feeling here. Mr. Santosh is not the only person who is facing this challenge. Many of us are facing this challenge, how to measure and monitor. So let me give you one example here. Most of the bosses and managers think that if there is a report, visible sign of some problem, my team will improve on its own, right? This is similar to thinking that if we put no parking signboard, people will not park there. ऐसा होता है क्या? नहीं होता. इंडिया में तो नहीं होता ऐसा, right? So that is the reason only knowing things or only having reports will not work. ठीक है? वो योग जैसा है. बहुत से लोग बोलते हैं कि I know I have done that course of yoga in 1982. तो मेरे को सब आसन आते हैं. वो आने का बात नहीं है, रोज करने का बात है. उसको अभ्यास बोलते हैं. Right? We have to practice it daily. So if you want to make sure that your team is doing what they are expected to do, there needs to be some mechanism of guidance, right? If bosses and team leaders are not going to see the dashboards, if we are not going to discuss the CRM figures in your review meetings, then things will not work out, right? It will never work out. So we have to do that. So we have some message from Ajinkya Kulkarni. Your perspective. Oh, thank you.
ये कैसा है अजिंक्य जी कि मैं पढ़ा पढ़ाया नहीं बोल रहा हूँ, किया कराया बोल रहा हूँ इसलिए रेलेवेंट लगता है, और जानने को सब आप लोगों के पास से ही मिलता है। देन प्रीति चौहान फ्रॉम हाउ टू मैनेज इंक्वायरी, ये डिस्कशन हो गया और अपना बहुत बार हुआ है। इंटरेक्शंस विद क्लाइंट, वर्क ऑन अपॉर्चुनिटी, recovery of market outstanding, Mr. John Joseph, this we have already discussed. Then Mukesh Kumar Singhania, Dhaval Lotia. Okay, now those who have migrated to Sangam CRM, there is one announcement here that before Sangam, जो पुराना CRM है ना, Fusion CRM, तो Fusion CRM में there were 3 variants, Alpha, Delta and Omega. In Sangam CRM there are no variants, there is only one Sangam CRM, which means whichever variant you were using previously, अल्फा था, डेल्टा था या ओमेगा था, यहाँ आएंगे ना तो आपको पूरा एक ही वर्जन में मिलेगा। ठीक है, तो वो सीधा सीमलेस ट्रांसफर हो जाएगा। तो आपका कोटेशन पहले नहीं था, शायद वो इसलिए नहीं था क्योंकि आप अल्फा यूज करते होंगे। अभी संगम में आएंगे तो आपको अल्फा मिल जाएगा, अरे संगम में आएंगे तो कोटेशन मिल जाएगा। Okay, Dhaval Lotia has a question. How shall we make them understand that CRM can help? Now, actually, his question is how can he make business owners realize? हाँ मुकेश भाई वही बोल रहा हूँ, बिकॉज यू आर नॉट यूज्ड इट, क्योंकि आपके पुराने सीआरएम में वो नहीं था, लेकिन संगम में वो कोटेशन का मॉड्यूल आएगा, चिंता मत करिए। अभी तक नहीं आया है तो आप टीम से बात करिए, वो आपको एक्टिवेट करके देंगे। So Dhaval is asking how can he make business owners realize the importance of CRM. So धवल भाई ज्यादा चिंता मत करो, इन सबको बुक पढ़ने को दो, that will help 100%. Shashank Singh has asked implementing of CRM to entire new hire team. सर वो बहुत सिंपल है, जो यहाँ पे कंसेप्ट टॉक में लिखा गया ना वही करना है। शशांक जी, इफ यू आर देयर इन द मीटिंग टुडे, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज अनम्यूट एंड स्पीक, बिकॉज ये क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। अगर आप हैं तो या तो चैट में लिखिए डिटेल में, या फिर क्वेश्चन आप बोल दीजिए। करंट चैलेंजेस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीआरएम। जगदीप भाई आप बुक पढ़ लीजिए और बुक में से आपको आंसर मिलेगा, ये मेरा पक्का वादा है। और अगर बुक अभी तक नहीं मिला है आपको तो आपने कुरियर में है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर मेरे को एड्रेस भेजिए, मैं आपको बुक भेज दूंगा। ये सर क्लीनिंग डेटा के ऊपर मिस्टर राजन से बात कर रहा हूँ। क्लीनिंग डेटा के ऊपर भी ऑलरेडी हैड वन संगम कंसेप्ट टॉक, डेटा क्वालिटी मैनेजमेंट। मे बी यू कैन वॉच दिस वंस। इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्स प्रोसेस, ये तो हो गया ना बात अपना। रीना मलकानी, वी आर ऑल्सो फेसिंग प्रॉब्लम इन पैंडेमिक। ये सबका हालत ऐसा है, कोई टेंशन नहीं है। How can I communicate effectively in this COVID situation? Only one way. Don't talk upfront about the business. First talk whether के सामने वाला आदमी ठीक है कि नहीं। उसके घर में किसी का मौत हो गया होगा और अगर आप सेल्स की इंक्वायरी की बात करोगे तो भड़केगा ही ना, मैं भी भड़कूंगा, उसमें क्या है। And Orchid में से हरीश पानू has asked how we reach or find the right customer. So here I will give you one video that we have, and I think that will help you. And that video talks about qualification. Importance of inquiry qualification. I will not play this video. I'm just sharing this in the chat with all of you. Maybe that will be helpful to you. Then database storage. Priyanka Jahangir has asked
Now, Priyanka ji, I'm not clear what exactly you want to ask here, but I strongly recommend that this concept talks, previously recorded concept talks हम जो बोल रहे थे वो आप देखिए. अच्छा, in our YouTube channel we have lots of videos about how to use CRM also, then how different modules work, अलग अलग फीचर्स क्या आ रहे हैं हम उसके भी वीडियो रिलीज करते हैं. आप देखो तो सही, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए. How to create inquiries, how to audit and point out mistakes of individuals in our common group with NJ executive. सर वो ऑडिट करा लो, हो जाएगा. और हमने पहले ही एक वीडियो देख लिया है, व्हाट इज द एक्चुअल रीजन व्हाई योर यूजर्स आर नॉट यूजिंग सीआरएम, तो वो क्लियर हो गया अभी सबको. देन ये बिन्नी सिंह फ्रॉम साक्षी इन्फो केयर हैज टोल्ड ऑटोमेटिक टैगिंग का एरर. अच्छा, ये एरर मतलब ये वाला एरर है. सो ये मुझे लगता है सपोर्ट का इश्यू, आप वहां पूछ लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा. आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर व्हाट इज द इश्यू, सो आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट हियर. And then we have Bhavyashri again from LDS. How to delete if we have entered wrong entry? This I think, madam, you will have to ask to Sunil, because this is as per the configuration as suggested by your CRM admin. तो उन्होंने राइट्स नहीं दिया होगा इसलिए आप नहीं कर पा रहे होंगे. देन गिन्नी स्पेक्ट्रा में से रक्षा बोल रहे हैं कि कॉम्पिटिटर्स का प्राइस लेस है. ये मैडम आपके बॉस से एक बार बात करना पड़ेगा कि इतना क्यों ज्यादा प्राइस कर रहे हैं. नो, जोक्स अपार्ट, वी एज ए सेल्स टीम नीड ए प्रॉपर जस्टिफिकेशन फॉर आवर ऑफरिंग. ठीक है, तो अगर मेरा सीआरएम 12,000 रुपया पर यूजर का है ना, या 25,000 रुपया पर यूजर का है, तो मेरी सेल्स टीम को ये मालूम होना चाहिए कि क्यों 25,000 हम चार्ज कर रहे हैं. और अगर कोई 2,000 में दे रहा है तो वो 2,000 वाला में और 25,000 वाले में फर्क क्या है. अगर ये फर्क नहीं क्लियर है तो मुझे लगता है कि ये आपका सेल्स ट्रेनिंग और होना चाहिए. सीआरएम का ट्रेनिंग नहीं, सेल्स ट्रेनिंग. सी मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल कंफ्यूज बिटवीन दिस, सेल्स ट्रेनिंग करना है कि सीआरएम करना है. अच्छा, सेल्स ट्रेनिंग ऑल्सो हैज टू कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू मी. वन इज द टेक्निकल पार्ट जिसको हम लोग प्रोडक्ट ट्रेनिंग बोलते हैं, एंड सेकंड इज द मेजर पार्ट जिसको हम लोग सॉफ्ट स्किल बोलते हैं. एंड दैट सॉफ्ट स्किल विल कवर लॉट ऑफ स्टफ. ये सेल्स का एक्चुअल जो प्रोसेस है उसका बात है. ठीक है, तो टेक्निकल पार्ट है ना कि प्रोडक्ट का ब्रोशर मिल गया, कैसे ईमेल करने का वो समझ गया, दैट इज ऑल वेरी व्हाट यू कैन से क्लरिकल या बहुत मामूली चीज है. जो सॉफ्ट स्किल वाला पार्ट है ना वो इंपॉर्टेंट है, एंड आई थिंक वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दोस पार्ट्स, द सॉफ्ट स्किल वाला पार्ट. Abhrodip Sinha, I think we can do some audit sessions with your team. And when I say audit sessions, once we meet with your team and understand your sales process and sales challenges, maybe we can suggest something. But then we will need to have meetings. Generically, के hospitality sector में क्या हो सकता है, that I will not be able to help right now. And I suppose you are from Khill Group, so I have already discussed. Let's have a meeting with Vishal ji also. And it is very encouraging to see CEO or an owner of such a large company seriously involved in the CRM implementation. That's very nice to see. Then Mr. Sashank Singh, सर ये वापस ऑडिट वाला ही मामला है, आप ऑडिट करेंगे तो हो जाएगा. देन हाउ टू अप्रोच और कन्विंस कस्टमर्स ओवर द फोन इन सोनिक. तपस, हाँ, यस 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 तपस जी. अच्छा, फोन पे सी लॉट ऑफ पीपल हैव फेस दिस प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक सिनेरियो, क्योंकि लॉकडाउन है, आप कस्टमर को जा नहीं सकते हैं, सब कुछ यहाँ से फोन से बताना पड़ेगा. Now, there is a lot of complications involved, but I will share very briefly what I understand. See, when I meet you in person, 91% of my communication is non-verbal.
right? And when I'm not meeting you, I'm calling you, I'm able to communicate with you only on that 9% जो वर्बल है ना वही, ठीक है? तो ये जो नॉन वर्बल वाला बड़ा पोर्शन निकल गया है ना, उसका कुछ इलाज करना पड़ेगा। अच्छा, उसका इलाज कैसे कर सकते हैं? तो ये वर्बल वाले को ज़्यादा इफेक्टिव बनाना पड़ेगा। और ये इफेक्टिव कैसे बनेगा? इसके लिए थोड़ा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और प्रिपरेशन क्या करना है? तो प्रिपरेशन कस्टमर के बारे में ज़्यादा करना है, प्रोडक्ट के बारे में तो किया, समझा। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। व्हेन वी आर टॉकिंग टू somebody over the phone, and that to a stranger, right? Just imagine one scenario. This scenario or answer will help, this just imagination will help you to find the question to this answer. और ये आंसर तपस भाई ने लिखा है, लेकिन ये क्वेश्चन तपस जी ने लिखा है, लेकिन ये सबका क्वेश्चन है, हाउ टू कम्युनिकेट और कन्विंस कन्वीनियंटली कन्विंसिंगली टू द कस्टमर ओवर द फोन, खास करके ऐसे सिनेरियो में। तो ये ऐसा सोच के देखिए कि अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं और आपके बाजू में कोई बैठा है, सो हाउ डू यू स्टार्ट द कन्वर्सेशन? I will tell you one scenario. So just I am sitting alongside somebody in a train. I don't know that person, and I'm just telling you, hi, I am Limesh Parekh. I work as a CEO of NGIT Solutions Limited. My company is a 21-year-old company. We are based out of Bilad, Gujarat, and we are an 80 people team. We are into CRM. How much do you think he or she is interested in listening to this conversation? Right? This is a monologue. This is not a dialogue. तो ये अगर कन्वर्सेशन अच्छा करना है तो क्या करना चाहिए? आई विल हैव टू टॉक अबाउट हिम और हर, नॉट अबाउट मी। सो ये जो मैं बोल रहा था ना कि वो जो 9% ही वर्बल कम्युनिकेशन है, इफ यू वांट टू मेक दैट इफेक्टिव, वी नीड टू टॉक मोर अबाउट द कस्टमर, वी नीड टू नो मोर अबाउट द कस्टमर, देन दिस बिकम्स एंगेजिंग। हाँ, ये मतलब मैंने अभी बोला, शायद डेल कार्नेगी ने पहले बोला होगा। I have not yet read any book of Dale Carnegie, but heard lot of things about him. Yet to read the book. So then, anything new question? Staff is not using CRM seriously, Mr. Shankar Gupta. Sir, we already discussed this. And see, I take 100% responsibility of my team if they are not following the process which was discussed in the meeting. ठीक है, ये सारा गलती मेरा ही है, राइट? अगर वो उनका भी गलती है ना तो भी मेरा ही गलती है, क्योंकि उनको एनजे में लाया कौन? ठीक है। सो व्हेन योर टीम इज नॉट यूजिंग सीआरएम, दिस इज पर्टिकुलरली फॉर द बॉसेस, सॉरी फॉर बीइंग लिटिल ब्लंट, लेकिन वी विल हैव टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओनर्स। ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है ना कि जो सुधरने वाला ही नहीं है, तो अपने को डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई ऐसा व्यक्ति रखना है कि नहीं रखना है। And we don't have any new queries here. बाकी सब चीज ऐसा है जो हम डिस्कस कर चुके। What I suggest is, now we already covered almost 90 minutes of it, and thank you all for being along with me. So if there are some other questions, we can. Mohan Sharma has asked question, how can I explain, suggest someone about to start for CRM? अच्छा, CRM यूज करना चालू करने वाले हैं तो क्या करना है? मोहन, इफ यू कैन पॉसिबली जस्ट एनेबल योर माइक एंड स्पीक। अच्छा, by the way, we have one video for that also, how to start using CRM. I will share that video with you. Sir, yes, sir. Good afternoon. Limesh sir, good afternoon. Very good afternoon, sir. मैं ये बोलना चाहता था कि हम जैसे अपने कुछ फ्रेंड्स है या जान पहचान में है, उनकी भी जैसे टीम है, या उनको भी हम सजेस्ट करना चाहते हैं सीआरएम के लिए।
हाँ तो उसके लिए स्टार्टिंग कैसे की जाए? सर, उनको बिग बुक है ना, गिफ्ट कर दो, ये बुक दिखाओ और बोलो कि तेरे को बुक चाहिए तो मैं ये भेजता हूँ तुझे, ठीक है। और आप भेजना अपने खर्चे में मत करो, मुझे बोलो, मैं भेज दूंगा, राइट सर, ठीक है। थैंक यू सर। Yes. So yes, Mr. Suhas Rao, I had a discussion with your with our team, because you are using that particular quotation Quoteworks add-on, Quoteworks tool, which none of our other customers are using. So Quoteworks integration we had done in old CRM, but in new CRM the platform might not allow us to do that, and because no other customer is using it, it will be very costly if I put this cost on you, right? So that is the reason, we had discussed this today morning only with our team. So I'll get back to you on this. Maybe we will have a call today after this meeting, or we can have call on Monday morning. I hope I answered your question, Suhas sir. हाँ जी मनिंदर जी बोलिए, आप चाहिए तो अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। Acha, if any one of you wants to ask any question, because we will not be taking the topic today which was as per agenda, we already exhausted our entire 90 minutes. और मेरा तो है ना, वो शोले की बसंती के जैसा हो गया है, आप लोगों की बातों में कब वक्त निकल गया मालूम ही नहीं पड़ा। यस मनिंदर जी बोलिए। सर मैंने वही बोला था कि जिस पे टॉपिक पे हमने वो करा था वो शुरू ही नहीं हुआ, तो वो क्या खत्म करने वाले हैं। हाँ तो और क्या, अभी 1.5 घंटा हो गया सर, अपना मुलाकात का वक्त खत्म हुआ। तो बसंती थक गई है, हाँ वो कह रहे थे बसंती थक गई है। ना ना, बसंती नहीं थकी सर। सॉरी सॉरी सर, आपको कुछ ऐसा लगा। नहीं नहीं, क्या है, सी आई कैन स्पीक, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, बट इट इज ऑलरेडी 90 मिनट्स, और जो अपना फोकस का दायरा रहता है ना, वो 90 मिनट से ज्यादा लंबा करेंगे ना, बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। सो लेट अस शेड्यूल अगेन दिस नेक्स्ट टाइम एंड वी विल डेफिनेटली डू इट। Yes, yes, surely we will reschedule this. But I think the questions were very interesting and the answers have helped all of you in general. ऐसा नहीं कि जिसने सवाल पूछा उसको ही काम का लगा, बाकी के लोगों को भी शायद काम का लगा। And regarding how to manage the sales team specifically in pandemic, there is one thing that we want to do, I want to suggest, यो मैंने बोल दिया है पहले, मैं वापस रिपीट करता हूँ। एक तो आपकी टीम से बात करने का थोड़ा बढ़ाइए, ठीक है, तो थोड़ा टीम को भी कॉन्फिडेंस लगे, उनके भी रिलेटिव्स में कोई ना कहीं टपक गया होगा, दे आर ऑल्सो स्ट्रेस्ड आउट, सबको टेंशन है और स्ट्रेस है, ठीक है, तो दे नीड सम कॉन्फिडेंस फ्रॉम यू एज देयर बॉस एंड मेंटर। एंड दूसरा ये कि आपके कस्टमर्स के साथ जो बात करने का है ना, ये टाइम पे आपको बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपके सामने हूँ, राइट, तो मैं आप लोगों से ज़्यादा बात कर रहा हूँ, आई हैव बीन इवन कॉलिंग यू मेनी ऑफ यू वेरी फ्रीक्वेंटली। ये इसलिए जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि आप छोड़ के चले जाओगे तो मेरा धंधा का क्या होगा, बट बिकॉज वी हैव ए रिलेशनशिप, वी नीड टू टेक केयर ऑफ ईच अदर। दैट इज द ओनली वे टू सर्वाइव इन दिस पैंडेमिक, बिजनेस हो या पर्सनल हो। Yes, Ajinkya ji, today's agenda will be rescheduled. When? I think, what about next week? Instead of doing it 15 days later, अगले ही सैटरडे को रखते हैं 4 to 5:30. Is that okay? Limesh ji, Yes, sir. now I just posted a question. I just wanted to have a clear view from you. Current times are very, very tough for everybody, right? Yes. For people like us who are trying to do some, inroads into businesses, and also customer is also facing challenging times. हाँ Now, in these times, he's not a customer will not be receptive to your sales pitches. So, what is the best methodology to be able to talk to him and still generate leads? सर, फर्स्ट थिंग सेल्स पिच करने का कोशिश ही मत करो ना, हाउ यू कैन हेल्प हिम, यू कैन ओनली डिस्कस दैट, ठीक है।
Now we have most of us have not realized, but we as a salesperson can help lot of people. ठीक है, तो ये सेल्स वाला आदमी हेल्प क्या कर सकता है, इसको थोड़ा सा सीरियसली सोचने का जरूरत है। और दूसरा ये कि मैं जो हेल्प करना चाहता हूं, मेरा कस्टमर वो लेना चाहता है कि नहीं, या वो लेने की अभी परिस्थिति में है कि नहीं, वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, सो वट एवर Sir, प्रोडक्ट और सोल्यूशन वी आर सेलिंग टू कस्टमर, उससे उसका धंधे को बेनिफिट होगा। तो पहले तो ये थोड़ा सा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर ले। और मैं वापस बोलता हूं सर, अगर आपके डायरेक्टली कॉल्स जाने लगे ना ज्यादा कस्टमर्स को, तो रिलेशनशिप में जो ओवरऑल गर्मी आएगी ना, उससे धंधा बढ़ जाएगा। और ये मेरा 22 साल का अनुभव है। इफ आई स्टार्ट मेकिंग मोर कॉल्स टू माय कस्टमर्स एंड दीज आर जस्ट हाई हेलो कॉल्स, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं सेल्स पिच करता हूँ, तो बहुत फर्क पड़ जाता है। हमारे यहाँ जो इंक्वायरी आ रही है उसमें भी फर्क पड़ जाता है, जो क्लोजर्स हो रहे हैं उसमें भी फर्क पड़ जाता है। एंड बिकॉज वी आर यूजिंग CRM, सो आई हैव एन एडेड एडवांटेज। मुझे थोड़ा सा ये भी हिंट मिलता है कि किसको किसको फोन करना है। सर एक सवाल था हमारा, प्लीज। सर एक ना, जैसे अभी आपने कहा कि आप यदि कोई कस्टमर फनल के पास लोगे, आप फनल भरी हुई है, मैनेजमेंट कस्टमर को आप कह सकते हो कि सॉरी वी कांट गिव द मटेरियल ऑन दीज रेट्स और व्हाट एवर इट इज। जब आपने एक एग्जांपल भी दिया था, तो उस केस में क्या होता है, कस्टमर कई बार अभी जैसे सिनेरियो चल रहा है, तो जैसे मैं रबड़ इंडस्ट्री से हूँ, तो रबड़ में रॉ मटेरियल के प्राइसेस बहुत हाइक हो रहे हैं, हर में ही हो रहे हैं लेकिन रबड़ में भी हो रहे हैं। तो कस्टमर कहता है सर अभी ऐसे टाइम पे आप हमसे रेट इंक्रीज की बात कर रहे हो या फिर आप बिल्कुल सीधे से नो कर रहे हो। तो हमें क्वेश्चन ये है कि हमें उसको किस तरह से कन्विंस कर पाए कि वो हमारी बात भी माने और हम उसको लूज भी नहीं करना चाहते। सर पहले बात ये बताइए आप कि आप जो बोल रहे हो कि प्राइस इंक्रीज हुआ है, ये सच है कि आप मुनाफाखोरी कर रहे हो? सर सच में इंक्रीज हुआ, हाँ तो और सच में वी हुआ है हैड ना। टू डिस्कस लास्ट 2-3 मंथ्स। हाँ तो ये कस्टमर को बताना पड़ेगा कि सच में हुआ है। दिस माइट बी कमिंग ऑन न्यूज मेनी टाइम्स, ये बहुत जगह पे आता होगा, अलग अलग न्यूज़पेपर में आता होगा, अलग अलग वेबसाइट्स पे आता होगा, तो ये शेयर करना पड़ेगा कि भाई ये हकीकत है अभी सिस्टम का। सर वो उसको शेयर किया, लेकिन उसका ये कहना है कि प्लीज गिव दिस टाइम फॉर एग्जम्पशन फॉर मी। दैट्स व्हाई उसका कहना है कि इस बार मेरी हेल्प कर दो, मैं नेक्स्ट टाइम। लेकिन अब मैं भी तो उसका नुकसान नहीं उठा सकता, जो रॉ मटेरियल पीछे से ही मुझे इंक्रीज होकर मिल हाँ रहा है, तो तो भाई अपने मैं। को, सो आई एम सी व्हेन आई से कि नेगोशिएशन में ये बात करना है, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि मैं ये ना मेरा पॉलिसी है करके बोलूंगा, लेकिन मैं ऐसा बोलूंगा कि सर मेरे सर्वाइवल का प्रॉब्लम है। ओके। और देखो बात हकीकत है, अगर मैंने मेरे कस्टमर पास से वो चार्ज नहीं लिया जो लेना चाहिए, तो मैं मेरे टीम को कैसे सैलरी दूंगा, मैं नया बिल्कुल सर, प्रोडक्ट कैसे बनाऊंगा? ठीक है, अगर ये वेंडर ही नहीं रहा तो तुम अच्छा भाव लेके क्या कर लोगे? बिल्कुल ट्रू है सर, मैं वही चीज समझना ये चाह रहा था, बात है हाउ ना, कैन। मतलब अपना सर्वाइवल का इश्यू है, ये कन्विंसिंगली कस्टमर को बताना पड़ेगा। एंड बिकॉज यू आर द बॉस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन डू इट वेरी इजीली। राइट सर। ठीक है, ओके। जी सर। हेलो। यस सर, हेलो। So do we have any more questions or we should conclude? Limesh bhai, Yes sir, one small contribution from me. बोलो ना सर। The people who are facing real hardship time trying to negotiate with customers or हाँ, customers negotiating with them, vice versa. I right, think they need. So there is a lot of good stuff available on the net and in real life and also in movies, which right. they can take inspiration from. So one example I'd like to share with you all is in Pursuit of Happiness, where a sales guy in his tough time goes and tries to sell things. Maybe Yeah. they need to go and have a look at that and get inspiration from it, because it's a different stroke for different people. There is no universal solution or silver bullet that can be given to everybody in these pandemic times. That's all. Yeah, Thanks. true, true, very true. ये राजेश भाई ने बोला वो मूवी देखने लायक है सर, सच में इंस्पायरिंग है। पेंडेमिक क्या, पेंडेमिक के बाद में भी इंस्पिरेशन मिलेगा आपको। Okay, so we will postpone this meeting to next week, and thank you very much for all of thank you very much to all of you for
sharing your time with us. और अपना अपना ध्यान रखिए. कोरोना से मतलब डर जाने की जरूरत नहीं, लेकिन डर के रहना, ठीक है. होशियारी मत करना. बीमार पड़ जाओगे तो अगले मीटिंग में नहीं आओगे, मैं मीटिंग कैसे करूंगा, ठीक है. एंड movie name is let me share with you the link. Pursuit of Happiness. In Pursuit of Happiness, Will Smith movie. Will Smith movie. अरे बहुत सुपर ऊपर हिट मूवी सर. ये रहा Pursuit of Happiness. ठीक है. ओके, सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. अगले हफ्ते मिलते हैं. अच्छा, दूसरा एक खास बात, आप लोग जब भी रजिस्ट्रेशन करवाते हो ना, तो आपके बाकी के टीम मेंबर्स को बोलो कि रजिस्ट्रेशन कराएं. एक कंपनी में से एक ही जन क्यों आता है? ट्रेनिंग तो फ्री है ना भाई. और दूसरा बात, जब रजिस्ट्रेशन में पूछा गया है कि व्हाट्सएप वाला नंबर डालना है, तो ऑफिस का नंबर क्यों डालते हो? खुद का नंबर डालो, बिकॉज वी वांट टू कम्युनिकेट समथिंग टू यू. ठीक है. जितेंद्र भाई, थैंक यू वेरी मच. चलिए सर, तो थैंक यू. आई एम एंडिंग. सर, आर यू अ मूवी लवर? आपने बुक नहीं पढ़ा क्या? सर वही तो मैं कह रहा हूँ, बुक्स मैंने पूरी पढ़ ली, उसमें इतने बढ़िया तरीके से चिपका दिए डायलॉग जगह. मतलब मेरा एक खाने का शौक है और एक पिक्चर देखने एक का. मूवी का. बहुत अच्छे. ठीक है. ओके सर. तो आई ऑल्सो हैव अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड वाचिंग द मूवीज. तो लाइफ को और मूवी के डायलॉग्स को रिलेट करने का बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे. ठीक है सर, थैंक यू, बाय ऑल ऑफ यू.